Hello friends, welcome back to the series of lecture. This is the 31st lecture of this series of CPC. In this lecture we would start with order 1. Now देखो order 1 is basically related to parties. Now parties का joinder, non-joinder and misjoinder. These three situations you have to understand. अब इसमें topics क्या क्या हैं वो बता देता हूँ मैं आपको पहले. अब इसमें आपको क्या क्या देखना है ये देख लीजिए पहले आप. What is the meaning of necessary and proper parties? Then thereafter is the concept of joinder, non-joinder and misjoinder of parties. तो इसका तो जनरल डिस्कशन होगा. इसके बाद next you have to understand in joinder these parties when they can be joined. When the parties can be joined. और फिर नॉन जॉइंडर एंड मिस जॉइंडर, इसके खिलाफ आप ऑब्जेक्शन कब रेज कर सकते हो? अगर पार्टीज को नॉन ज्वाइन कर दिया है, नेसेसरी पार्टी हु ought to have been joined but not joined, or a wrong party has been joined, then that is a case of misjoinder. Then when can an opposite party can raise objection in that regard? In non-joinder and misjoinder, when can an objection is raised and what is the remedy in that? अगर किसी पार्टी को आपने नॉन ज्वाइन किया है या मिस ज्वाइन किया है, व्हाट इज द रेमेडी अवेलेबल? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन. अब देखो प्रॉपर जॉइंडर के केस में भी कोर्ट के पास ये पावर है ऑर्डर 1 रूल 2 और रूल 3A में. अगर आपने प्रॉपर जॉइंडर भी किया है फिर भी द कोर्ट हैज द पावर टू सेपरेट द ट्रायल्स इन ऑर्डर 1 रूल 2 एंड रूल 3A. ठीक, तो प्रॉपर जॉइंडर के केस में भी पावर कोर्ट के पास है ऑर्डर 1 रूल 2 एंड रूल 3A में टू सेपरेट ट्रायल्स. इफ देयर वाज अ प्रॉपर जॉइंडर देन आल्सो द सेपरेशन ऑफ ट्रायल कैन बी डन अंडर दीज प्रोविजंस. बट अदरवाइज मिस जॉइंडर और नॉन जॉइंडर के लिए रेमेडी आपके पास है, दैट इज ऑर्डर 1 रूल 10 एंड सब रूल 2. दैट इज अ केस ऑफ नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर. अगर पार्टीज नहीं ज्वाइन किए गए देन द कोर्ट कैन इम्प्लीट द पार्टीज. अगर पार्टी को प्रोफॉर्मा डिफेंडेंट बना दिया गया देन द कोर्ट कैन ट्रांसपोज द पार्टी. इफ अ पार्टी हैज wrongfully joined then the court can strike out the name of the party. So that is what is in order 1 rule 10 sub rule 2. Now उसके बाद you have to discuss misdescription of parties. That is order 1 rule 10 sub rule 1. Misdescription of parties order 1 rule 10 sub rule 1. Then उसके बाद आपका बचेगा रिप्रेजेंटेटिव सूट. यहाँ पर मेन टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे. That is order 1 rule 8, that is representative suit. Then we will discuss after that interpleader suit, that is order 35 plus section 88. Order 35 read with section 88. तो पहले we have to discuss these topics in upcoming classes. अब इसमें जो पहला पॉइंट है that is necessary and proper party. So first point is necessary and proper party. What is meant by necessary and proper party? Now a party who is not been added and therefore his rights are not decided and therefore the rights are not decided and hence the suit will be said to be improperly decided. Such a party will be called what? Necessary party. ठीक. If a party is not joined और उसके ना join करने से सूट को improperly decided माना जाएगा, then that party will be called a necessary party. Now in reference to the subject matter of the suit, if a party is not added in the suit, then the non-joinder of that party will result into difficulty in deciding the suit. That will be called a necessary party. And the proper party is such whose rights are somewhere connected to the subject matter, but they are not very necessarily and strongly connected to the subject matter. And even though he is not a necessary party, since he has got some rights connected, so it will be proper to adding that party so that the suit will be more comprehensively decided. So that is proper party.
Not joining of the necessary party will affect the merits of the suit and therefore the suit will not be properly decided. अब देखो इन सारी definitions के अनुसार one point is missing. Let's see what's that point. Suppose there is a suit between A and B. A और B के बीच सूट हुआ and there is a third person C जो कि सूट में पार्टी नहीं है. अब लेकिन जो इस सूट का सब्जेक्ट मैटर है, वॉट एवर बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट, दिस C is also connected to that subject matter in the same manner as A and B are connected. This C has also got an interest in the subject matter of the suit, but C has been not joined as a party. Neither A has been made him a co-plaintiff, nor A has made him a co-defendant with B. And therefore non-joinder of C may create trouble in the suit, as C is so connected with the subject matter in the suit that there is a complete identity of issues between A and B and also between C and D with respect to subject matter. So there is a complete identity of issues between A and B and also between C and B with respect to the subject matter. There is complete identity of issues between A and B and C and B with respect to the subject matter. Now A और B के बीच मान लो, suppose between A and B with respect to the subject matter, these are the three issues. अब C को आपने पार्टी बनाया नहीं है, लेकिन अगर C और B के बीच अगर सूट होता तो उनके बीच भी यही तीन इशू होते and the issues would have been totally identical. So complete overlapping of the issues. So complete identities of the issues between A and B on the one hand and between C and B on the other hand with respect to the subject matter. If there is a complete identity of the issues, means all issues A and C are together, then you will say that C is a necessary party. And if you do not add C, then it may be difficult to decide the case. It is not impossible to decide the case, but it may be difficult to decide the case because the suit does not include a person who actually had got conflict of interest with the party concerned, and therefore, number one, it is difficult to decide the suit, and even if it is decided, the decision is not comprehensive because the rights of one connected and strongly connected persons has not been decided. And lastly and the most importantly, the decree of the suit may not be executed. It can be executed, but C was not added. So during the execution of the decree, C stands in his legal capacity to object to the execution of decree on the ground that I had also got my joint interest and my interest has not been determined and I am not heard in the suit. तो ये जो एग्जीक्यूशन वाला पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है necessary और proper party. Necessary and proper party are those parties, necessary and proper are those parties who has got the complete overlapping of the issues with the parties in the suit and without whom the merits of the suit will not be as comprehensively and as effectively decided. जैसे मैंने पहले बताया था effective order. So the effective order is in the sense of the decision being more comprehensive and more importantly the effective judgment in the sense of is being executable. If one of the necessary party is not being added, then decree can be executed. मान लो A को डिग्री मिल गई तो B के खिलाफ एग्जीक्यूट करा लेगा, लेकिन C stands in his legal capacity.
C stands here in his legal capacity at the stage of execution, and he may raise an objection that my rights are same and may with respect to subject matter I was not heard and therefore the decree shall not be executed. ठीक, so he stands in his legal capacity to obstruct the execution. अब मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जीक्यूशन नहीं होगा और मैं ये भी नहीं कह रहा कि डिग्री नहीं पास होगी। तो सी के एब्सेंस में डिग्री भी पास होगी और एग्जीक्यूशन भी हो सकता है, लेकिन डिग्री पास होगी तो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी क्योंकि पार्टी सारी नहीं है और ऑर्डर कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होगा। और एग्जीक्यूशन हो सकता है लेकिन एग्जीक्यूशन को रोकने की कैपेसिटी सी के पास है। ही कैन स्टॉप द एग्जीक्यूशन फ्रॉम बीइंग कंडक्टेड। ठीक, फॉर एग्जाम्पल A and C are the joint owners of a house and B has dispossessed them. अब A files a suit against B and C is not a party. C has got a joint owner. What are the issues between A and B? As to whether A was owner or not. How did the A becomes the owner? यही सब तो इशू होंगे। Has B dispossessed him? अब अगर C को पार्टी बनाओगे को प्लेंटिफ तो उसके और B के बीच भी तो एग्जैक्टली सेम इशूज होंगे। हाउ डिड द C बिकम्स द ओनर? अगर जॉइंट ओनर्स हैं तो ऑब्वियसली जो ओनरशिप का तरीका है वो भी दोनों का सेम होगा, एक तरीके से ही बने होंगे ओनर। देन हैड B dispossessed C and therefore that way all issues between A and B and C and B are common and identical, so that is why it is called necessary party. लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो जब एक पार्टी के मेन सूट के इशूज में एग्जैक्टली सेम इशूज ना हो, मे बी एक दो इशूज उसके कॉमन हैं लेकिन सारे इशूज सेम नहीं है। तो मान लो इसी केस में ए और बी के बीच ये 4 इशूज है मान लो, और सी और बी के बीच भी ये एग्जैक्टली 4 इशूज है, तो वो हो गया नेसेसरी पार्टी। लेकिन सी और बी के बीच मान लो ये एक कॉमन इशू है, ये वाला एक इशू कॉमन है, बाकी के 3 इशूज कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, सी को अगर आपने ज्वाइन नहीं भी किया तो बहुत बड़ी समस्या नहीं होने वाली क्योंकि सी की आइडेंटिटी ऑफ इशूज नहीं है, लेकिन चूंकि सब्जेक्ट मैटर से वो कनेक्टेड है कहीं ना कहीं ऑलरेडी ऑन मे बी 1 or 2 issues, so it is better you will add C as also a party so that the suit can be comprehensively decided and proper judgment can be passed. And if he did not join C, then also it hardly matters. C does not have the capacity to obstruct the decree because he does not have the identity of interest with A. But since there is some connection, C will be called a proper party. ठीक, तो इशूज के कॉन्टेक्स्ट में समझ में आया आपको? सारे के सारे इशूज सेम है नेसेसरी, और अगर एक दो इशूज कॉमन है बाकी के नहीं है तो इट इज प्रॉपर पार्टी। सारे के सारे इशूज कॉमन है देन इट इज नेसेसरी पार्टी। अब प्रॉपर पार्टी डिग्री के एग्जीक्यूशन को स्टॉप नहीं करवा सकता, नेसेसरी पार्टी डिग्री के एग्जीक्यूशन को स्टॉप करवा सकता है। ही हैज दैट लीगल कैपेसिटी। प्रॉपर पार्टी को अगर आप ऐड नहीं भी करोगे फिर भी सूट कॉम्प्रिहेंसिवली डिसाइड हो जाएगा, लेकिन नेसेसरी पार्टी को अगर ऐड नहीं करोगे तो सूट कॉम्प्रिहेंसिवली डिसाइड नहीं हो सकता। लेकिन प्रॉपर पार्टी को ऐड ना करने पर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी, लेकिन यू कैन नॉट से दैट द सूट वाज नॉट डिसाइडेड प्रॉपरली। लेकिन नेसेसरी पार्टी के केस में यू कैन से दैट। सो मीन्स मोर इम्पोर्टेंट द पार्टी इज हु? नेसेसरी पार्टी। अब इसमें एक दो केसेस लिखो आप। राइट, फर्स्ट केस रमेश हीराचंद वर्सेस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ग्रेटर बॉम्बे 1992 सुप्रीम कोर्ट। एंड केस नंबर 2 बलवंत एन विश्वामित्रा एंड अदर्स वर्सेस यादव सदाशिव मूले
अब वो मर गया होगा सूट के दौरान, तो डेड थ्रू LRs, इस तरीके से लिखो, डेड थ्रू LRs. Now this is 2004 Supreme Court. Now these two cases are important for understanding this concept. लिखो इसमें, in order to examine whether a party who has not been added in a suit, is a necessary party or not, the following has to be examined. पहला point, the issues means point of conflict. The issues between the existing parties to the suit has to be examined. ठीक, तो पहले उनके इश्यूज देखो, जैसे ए और बी था, तो ए और बी के इश्यूज देखो. So the issues between the existing parties to the suit has to be examined. Then number 2, then it has to be examined as to what are the issues between the third person. Third person means what? जिसको पार्टी नहीं बनाया. Issues between the third person and one of the parties. अब इसके बाद थर्ड स्टेज क्या होगा कि इश्यूज बिल्कुल सेम है कि नहीं. So write the third stage. Then it has to be examined whether the above two set of issues मतलब पहले पॉइंट वाले इश्यूज और सेकंड पॉइंट वाले इश्यूज are exactly identical or not. और exactly identical ना भी हो तो ब्रैकेट में डाल लो आप, it has to be substantially identical. If yes, then third person is a necessary party. अब next paragraph. There is complete overlapping of issues in the case of necessary parties. इसको next paragraph में लिखो. There is complete overlapping of issues in case of necessary parties, and therefore if such parties, if not added, the suit will not be determined comprehensively upon merits. And the judgment will not be as effective because the necessary party has not been heard. Also, the necessary party who was not joined has the legal capacity to create obstruction in the execution of decree. As he can always claim that he has a direct substantial interest in the subject matter of the suit, and he has not been heard. मतलब क्या, वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री को मुश्किल कर सकता है. ठीक, अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, right, in the case of proper party, the only difference is that all the issues are not substantially identical. Rather, there is an overlapping of one or some issues only. Thus, the other party is not connected to the suit in its entirety, and therefore even if he is not joined, the merits of the suit will not materially get affected, and the execution cannot be obstructed by him. But if he is added, the suit becomes more comprehensive and the rights of the connected parties can be decided. The suit will become more comprehensive and the rights of all connected parties can be decided.
अब देखो प्रॉपर पार्टीज के केस में ये है कि सारे इशूज सेम नहीं है, एक दो इशूज कॉमन है, तो कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट के टाइटल वगैरह से कनेक्टेड जरूर हैं, लेकिन अगर उसको नहीं भी ऐड करते हो तो सूट के मेरिट्स को और सूट के इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्डर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एग्जीक्यूशन को भी नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है तो उसको ऐड कर दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको ऐड करने पर सारे पार्टीज के राइट कॉम्प्रिहेंसिवली डिसाइड हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप वो मल्टीप्लिसिटी को अवॉइड कर सकते हैं और थोड़ा सा मेरिट्स ऑफ द केस और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब नहीं ऐड किया तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सिंस द पार्टी इज कनेक्टेड सो इट इज़ बेटर दैट ऐड हिम। जबकि नेसेसरी पार्टी में एडिशन इज द मस्ट, द रीज़न बीइंग इफ यू डोंट ऐड हिम he has a direct interest in the suit property and he has the same issues as the other party, and therefore if you don't add him, so therefore the one of the parties, so obviously one of the parties who is essentially to be added was not joined, so the merits of the case gets affected and the effectiveness of the judgment gets affected, and most importantly that the execution of tomorrow execution may be obstructed by that person and therefore he has to be added। अब वैसे तो प्रॉपर पार्टी को भी ऐड करना चाहिए था, बट नेसेसरी में इट इज कंपलसरी टू ऐड। ठीक, अब इसमें एग्जांपल्स देखेंगे। सो व्हाट आई टोल्ड you was, suppose A and B are into a suit and there are certain issues between them, issues मतलब matter in issue which are directly and substantially an issue, and there is one C who has not been made party. So now you see, suppose he is a party who wanted to become defendant. If the suit was filed against C, then the issue between the A and C would be exactly the same as of the issues between A and B. Take, if the suit has been filed against C, then the issue between A and C that has been exactly the same as were there between A and B, then you will say that there is complete overlapping of the issues, and one or two issues may be different but substantially the issues are same. Substantially the issues are same and therefore the C will be a necessary party. अब necessary party में the point is that the issues between the necessary party and the party to the suit, they are substantially the same, and therefore C be a necessary party as being joined to the suit, and the suit should be A versus B and C. तो उसी तरीके से plaintiff also, plaintiff का मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे मैंने defendant का example दिया, and in the case of proper parties I told you that there is suit between A and B. If A had filed a suit against C, if A had filed a suit against C, then the issues between A and C, out of those only maybe one of them would have been common, or maybe two of them be common, but all the issues are not substantially the same. So here therefore is not a complete identity of the issues between A and C, and therefore the C will be considered to be a proper party. The proper party and the necessary party में therefore the difference is what? That the issues are the substantially the same or identical in the case of necessary party, and some of the issues are common, and if some issues are common then it is a proper party. So that is one way to look at it, and the other way to look at it is that I have told you that in order to define a necessary party you have to see that if the necessary party is not joined, then would it create an obstruction in the final determination of the suit to pass an effective judgment, and plus would it obstruct the execution of the decree. If that is the case, then it is a necessary party. But if it is not going to affect the final determination of the suit, and it is not going to obstruct the execution, but if that necessary party
or if that party were joined, then the suit will have been more comprehensively determined, and the rights of all the persons involved would have been determined. The right of all the persons involved determined, then it is a case of proper party. The rights of all the persons involved would have been determined, then it is a case of proper party. अब इसमें एक एग्जाम्पल देखें आप. See the example. A is the landlord and B is the tenant and C is the subtenant. B is the tenant and C is the subtenant and C is the lawful subtenant. Means in the rent agreement, it is provided, as per the rent agreement, it is provided that we can put a subtenant in the premises. As per the rent agreement, it is provided that we can put a subtenant in the premises. अब A files a suit against B, suppose for eviction. A ने B के ऊपर सूट किया था eviction. अब प्रॉपर्टी का एक्चुअल पोजेशन किसके पास है? सबटेनेंट C के पास. अब उसने C को पार्टी नहीं बनाया है. अब आप अगर इशूज देखें और A और B के बीच, अगर A सूट फाइल करता C पर, तो जो इशूज हैं that will be the substantially the same. The only difference is that the C is the subtenant and B is the tenant. अब eviction के लिए actually अगर C को evict नहीं करवाओगे, then you will not get the eviction actually because C is in actual possession. अब since it is an lawful tenancy, it is an lawful tenancy, so the agreement between A and B will impliedly also be said to be agreement between A and C, क्योंकि अल्टीमेटली जो एग्रीमेंट A ने B के साथ किया था और A ने C के साथ किया था, but under the implied authority of A, because it is a lawful subtenancy, and therefore you can say that impliedly there was an agreement between A and C also. तो अगर B पर सूट करता और C को पार्टी नहीं बनाता, अगर A ने C पर सूट किया होता, then the issue that have been arisen that would have been the same as the issues between A and B, and therefore C will be considered to be a necessary party. The reason being that it is a lawful tenancy, it is under the implied authority of A. The issues are common, and therefore for eviction, it is essential that A should make B and C both co-defendant in the suit, and C is a necessary party. ठीक. Now I had said, because there is an implied authority of A to put C into tenancy, तो A का एग्रीमेंट B के साथ भी माना जाएगा और सेम एग्रीमेंट C के साथ भी माना जाएगा. If the terms of the agreement are the same, and therefore the issues for eviction between A and B and A and C, the substantially would be the same. The only difference is that in one case B is the tenant and in the other case the C is the subtenant. Otherwise the main issues for the eviction will be the same, and therefore here C will be considered to be a necessary party. अब एक केस लिखवाया था मैंने आपको, बलवंत एंड विश्वामित्र वाला केस. तो in this case this point is discussed. This point has been discussed in this case. इसमें लिख लो एक point. In the case of lawful subtenancy, the agreement is expressly between the landlord and the tenant, and impliedly the agreement also between landlord and the subtenant. Therefore, if the landlord files an eviction suit against the tenant, then the issues will substantially be the same as they would have been between the landlord and subtenant. As it is the case of lawful subtenancy, and therefore the subtenant would be considered to be a necessary party, and therefore the subtenant would be considered to be a necessary party. The subtenant has the legal capacity, lawful subtenant है ना,
the subtenant has a legal capacity to prevent the execution of the decree, if it is passed only against the tenant and not against the subtenant, because the subtenant is in lawful possession of the said premises. Now what I said was, इस केस में अगर आपने टेनेंट के ऊपर केस किया और आपको डिक्री मिल गई एविक्शन की, लेकिन टेनेंट तो पोजीशन में नहीं है, टेनेंट ने तो एक्चुअली सब टेनेंट को रखा था और वो भी लॉफुली रखा था। अब अगर आपको बी के खिलाफ टेनेंट के खिलाफ डिक्री मिल भी जाती है, लेकिन जब आप एग्जीक्यूशन के लिए जाओगे, अब यहाँ पर एक्चुअल पोजीशन तो सब टेनेंट के पास है, तो वो ऑब्जेक्शन करेगा दैट आई वॉज नॉट हर्ड, माई राइट्स वॉज नॉट हर्ड, आई ऑल्सो हैड सर्टेन इशूज which ought to have been discussed in the case, and therefore since decree is not against me, I was not a party, and therefore I will not evict the premises, and since he is in lawful possession, तो एक्चुअल एविक्शन तो तभी होगा जब आप उसको हटाओ, तो उसको हटाने के लिए डिक्री आपको उसके खिलाफ भी लेनी पड़ेगी, बिकॉज ही इज इन अ लॉफुल पोजेशन एंड देयरफॉर ही होल्ड द कैपेसिटी टू ऑब्स्ट्रक्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। अब इसको अगर आप कंपेयर करो अनलॉफुल सबटेनेंसी से, अब अनलॉफुल सबटेनेंसी के केस में द लैंडलॉर्ड डज नॉट हैव एनी एम्प्लॉयड agreement with the subtenant because he has not authorized the subtenancy. So in such a case, this subtenant is in illegal possession, and therefore if a decree is against the tenant, then it can be executed against the subtenant also, because the subtenant does not have the legal capacity to obstruct the decree because he is in illegal possession, and therefore there the subtenant cannot be considered to be a necessary party. But yes, since he is in the possession of the premises, so it is better that he should also have been joined in the suit, so that all the rights comprehensively would have been determined. So an unlawful subtenant cannot be considered to be necessary. Unlawful tenant could not be considered to be necessary, but he has got some overlapping ऑफ इशूज, बिकॉज उसका एग्रीमेंट टेनेंट के साथ तो है, बेशक अनलॉफुल है लेकिन एग्रीमेंट तो है सब टेनेंट के साथ, तो उसके इशूज अगर सुने जाते तो सूट कुड हैव बीन मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड देयरफॉर दीज विल बी कंसिडर्ड टू बी अ प्रॉपर पार्टी। तो इसको भी लिखिए आप, राइट इन नेक्स्ट पैराग्राफ, As compared to the above, an unlawful subtenant does not have any implied agreement with the landlord, and therefore he does not hold any legal capacity to obstruct the decree against the tenant. But he does have some issues which overlap with the issues between the landlord and the tenant, as he is in an agreement with the tenant, and also he is in actual possession of the property. Thus it would have been proper to join the unlawful subtenant. Thus it would have been proper to join the subtenant. कौन सा subtenant? Unlawful subtenant. To make the suit more comprehensive, and to have all the associated issues decided by the court. उसको ज्वाइन करना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो नेसेसरी पार्टी है, लेकिन उसको ज्वाइन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो पोजेशन में है, क्योंकि अल्टीमेटली डिक्री उसके खिलाफ ही एग्जीक्यूट होगी, और एग्जीक्यूट तो हो जाएगी लेकिन उसके भी कुछ राइट्स होंगे जो कि टेनेंट ने क्रिएट किए होंगे, तो उसको अगर ज्वाइन कर लो तो सूट ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिवली डिटरमिन हो जाएगा, एंड देयरफॉर ही इज़ नॉट नेसेसरी बट ही इज़ अ प्रॉपर पार्टी। ठीक, अब नेसेसरी पार्टीज के अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक तो पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, दे आर ऑल नेसेसरी पार्टीज। देन बेनिफिशियरीज इन द केस ऑफ अ ट्रस्ट,
beneficiaries in the case of a trust are also a necessary party. Then co-partners in a joint family, they will also be considered to be a necessary party. अगर joint family के लिए कोई suit हो, co-partner will be considered to be a necessary party. और जैसे joint family में मान लो partition का suit है, जिसमें एक co-partner दूसरे co-partner के ऊपर partition का suit किया, जिसमें कि many co-partners हैं, then they will all be considered to be necessary parties. Then उसके बाद आप लिख लो joint owners of some property. किसी property में कोई joint owners हैं, they will also be considered to be a necessary party. ठीक, अब proper party के लिए एक unlawful subtenant का एग्जाम्पल जो मैंने दिया, उसके अलावा एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं. अब सपोज there is a tenant R, and suppose there is some third person A who is threatening him to dispossess from the premises. He is some third person who is threatening R to dispossess. He is some third person, he is not landlord. He is threatening to dispossess R from the premises. He is threatening to dispossess R from the premises, and he is causing some mischief to the property. अब R files some suit for perpetual injunction. R ने perpetual injunction का सूट किया against A. Perpetual injunction is section 38 specific relief act. Section 38 specific relief act, where he got the decree to perpetually permanently injunct or prevent A from doing that act of threat. तो उसमें R ने A के खिलाफ perpetual injunction का सूट किया to prevent him from causing the threat and causing the mischief upon the party. In this suit, the status of the landlord, और जो लैंडलॉर्ड है उसको उसने पार्टी नहीं बनाया. अब द क्वेश्चन इज दैट वेदर द लैंडलॉर्ड इज अ नेसेसरी पार्टी और वेदर ही इज अ प्रॉपर पार्टी और वेदर ही इज नॉट एट ऑल कनेक्टेड. अब देखो लैंडलॉर्ड पोजेशन में तो नहीं है, कब्जे में तो नहीं है. कब्जे में तो आ रहा है, टेनेंट है. एज पर द रेंट एग्रीमेंट टेनेंट इज इन द पोजेशन एंड समवन is threatening him to dispossess. So tenant has to take care of his rights. Once the landlord has granted him the possession, then he is not having any right to possess and enjoy. The tenant is having the right to possess and enjoy, and therefore if someone is threatening the tenant, then obviously the tenant is having the right to file the suit. अब लैंडलॉर्ड के वहाँ पर लैंडलॉर्ड का उस ए के साथ कोई डायरेक्टली वहाँ पर जो सारे के सारे इशूज जो टेनेंट और ए के बीच, और वही सारे के सारे इशूज लैंडलॉर्ड और ए के बीच कॉमन नहीं हो सकते, बिकॉज टेनेंट आर के पास राइट टू पोजेस एंड एंजॉय है, लैंडलॉर्ड के पास अभी राइट टू एंजॉय एंड पोजेस नहीं है. लेकिन जिस दिन भी टेनेंट मकान खाली करेगा, द टेनेंट हैज टू हैंड ओवर द पोजेशन टू द लैंडलॉर्ड. अब here the landlord cannot be the necessary party because सारे issues tenant और A के बीच और landlord और A के बीच common नहीं है, because tenant is having the right to enjoy and possess, but that right is not there with the landlord, and ultimately that landlord is the owner. Landlord is the owner, and since he is the owner, he has got the larger interest that no one capture this property, because ultimately he has to take back the property from the tenant. So that you have understand. So कुछ issues common जरूर है in the sense of larger purpose, longer purpose. The property has ultimately gone back to him. अब अगर मैंने लैंडलॉर्ड को यहाँ पर प्लेंटिफ बना लिया, टेनेंट ने अगर यहाँ पर लैंडलॉर्ड को प्लेंटिफ बना लिया, आर और लैंडलॉर्ड, टेनेंट और लैंडलॉर्ड दोनों मिलकर सूट करते हैं ए के खिलाफ. अब लैंडलॉर्ड डज नॉट हैव एनी सब्सटेंशियल इशूज एक्सेप्टिंग दैट फैक्ट दैट ही इज अ लैंडलॉर्ड, ही इज अ ओनर, बट स्टिल ही हैज गॉट सम कनेक्शन बिकॉज अल्टीमेटली ही इज अ ओनर एंड लैंडलॉर्ड, सो ही वुड बी कंसिडर्ड टू बी अ प्रॉपर पार्टी. अगर लैंडलॉर्ड पार्टी बनने को तैयार नहीं है,
तो टेनेंट चाहे तो उसको प्रो फॉर्मा डिफेंडेंट बना सकता है एंड द कोर्ट में ट्रांसपोज हिम एज अ प्लेंटिफ एंड hence he will be considered to be a proper party and not a necessary party। ठीक, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई लैंडलॉर्ड है, उसने एक प्रीमाइसेस है जो रेंट पर दी टेनेंट आर को। अब वो रेंट पर दिया गया 5 साल के लिए लीज पर दिया गया। अब मान लो 4 फ्लोर्स हैं उस बिल्डिंग में, तो एक फ्लोर लैंडलॉर्ड ने दिया जो 3rd फ्लोर था किसी टेनेंट को आर को। अब वो 5 इयर्स के लिए लीज पे दिया। अब उसमें बेसिक स्ट्रक्चर वही रहे बिल्डिंग का, और अंदर छोटे मोटे अगर कोई चेंजेस करवाने तो वो करवा सकता है टेनेंट, ऐसी परमिशन लैंडलॉर्ड ने उसको दे दी। अब कुछ चेंजेस टेनेंट करवाने लगा अपने फ्लोर पर, तो 4th फ्लोर पर या 2nd फ्लोर वाला वो ऑब्जेक्ट करने वाला लगा कि आवाज आ रही है एंड यू डू नॉट डू दिस चेंजेस कंस्ट्रक्शन। अब landlord gave the possession to the tenant R and he is having the possession of the property. Once the landlord has given the possession to the tenant and asked him that whatever alterations you want to do except of the permanent alteration, whatever जो temporary alteration you want to do you can do। तो landlord का ये बोलकर तो काम खत्म हो गया, क्योंकि उसको टेनेंट के अनुसार खुद काम नहीं कराना पड़ेगा, टेनेंट को परमिशन दे दी। अब नाउ सम थर्ड पर्सन इज स्टॉपिंग हिम टू डू द चेंजेस। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन कर रहे हैं कि चेंजेस नहीं करने दे रहे बिकॉज आवाज आ रही है या फिर ऑल दिस। अब इन दिस केस मान लो आर फाइल्स अ सूट अगेंस्ट द थर्ड पर्सन एंड ही फाइल्स अ सूट एंड क्लेम्स द परपेचुअल इंजंक्शन एंड along with that a temporary injunction to prevent him from disturbing R from doing construction। अब इस सूट में मान लो वो जो 4th फ्लोर पे है वो भी टेनेंट है किसी लैंडलॉर्ड का, दूसरे लैंडलॉर्ड का। अब इन दिस सूट R is also tenant and A is also tenant। अब these two tenants are into a suit। अब उस लैंडलॉर्ड का यहाँ पर क्या फंक्शन है? लैंडलॉर्ड ने तो 5 साल के लिए रेंट पर दे दी, उसको पजेस तो नहीं करना अभी, लैंडलॉर्ड को वहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी नहीं करना, और लैंडलॉर्ड को अभी जैसे 5 साल का एग्रीमेंट है तो 5 साल तक उस प्रॉपर्टी को एंजॉय भी नहीं करना। सो फॉर 5 years द possession एंड द एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इज विद आर, बट यस ही इज लैंडलॉर्ड, with his permission tenant is doing the construction work and therefore the ultimate authority lies with the landlord, and he may stand into the court and he may say that I am the landlord and this is the permission I had given to him and ultimately the property has to revert back to him। तो अगर R plus the landlord files a suit against A, then here landlord is the proper party not a necessary party। अब उसी तरीके से अगर आर एक लैंडलॉर्ड को भी डाल दे इधर से इसके साथ, क्योंकि अब एक लैंडलॉर्ड से कोई मतलब नहीं है क्योंकि एक लैंडलॉर्ड तो पोजीशन दे के जा चुका, वो कहीं भी होगा, लेकिन अल्टीमेटली फिर भी उसी के परमिशन से ये आया है। तो अगर आप उसके लैंडलॉर्ड को पार्टी बना देते हैं देन ही विल ऑल्सो कॉल्ड अ प्रॉपर पार्टी। ठीक, तो उसी तरीके से सिचुएशन देखना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा भी ओवरलैपिंग अगर है देन द पार्टी विल बी कॉल्ड अ प्रॉपर पार्टी। कहीं भी उसका अगर कोई इंटरेस्ट सब्जेक्ट मैटर में इन्वॉल्व है देन ही विल बी कॉल्ड अ प्रॉपर पार्टी, और अगर कंप्लीट ओवरलैपिंग ऑफ इशूज है देन इट विल बी कॉल्ड अ नेसेसरी पार्टी। सो दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टॉपिक, proper and necessary parties, necessary and proper parties। So that's it for this lecture and this topic. Thank you।